मुंबई में विदेश मंत्री जो पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान के हैं वह पहुंच चुके हैं और जो जानकारी आ रही है वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में करने जा रहे हैं। उनके साथ सुधींद्र कुलकर्णी भी मौजूद हैं, खुर्शीद कसूरी जो कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होने जा रही है। जाहिर है उससे पहले उनसे जब पूछा गया कि आपकी क्या राय है जो कुछ हुआ है, उन्होंने बहुत अफसोसजनक जताया और ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जिस बात का जिक्र बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं और राज्य सरकार महाराष्ट्र में भी कर रही है कि कानूनी तौर पर और पुलिस प्रशासनिक तौर पर भी इस कार्यक्रम को होने दिया जाएगा। कानूनी शब्द इसलिए इस्तेमाल क्योंकि बाकायदा वीज़ा देकर आए हैं खुर्शीद साहब, उनको वीज़ा दिया गया तब वो पहुँचे हैं। तो बीजेपी की राय भी है, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, लेकिन शिवसेना का कहना है कि ये बहुत ही सौम्य तरीका था, यानी उग्र तरीका और भी कुछ दूसरा हो सकता था। ये एक सौम्य तरीका है जिसमें विरोध किया गया है, सिर्फ स्याही डाली गई है और स्याही सिर्फ स्याही नहीं है, प्रतीकात्मक है, ये जवानों का खून है। कई सवाल हैं चूँकि ये विदेश नीति, पड़ोसी देश, भारत सरकार का रुख इस पर क्या है, उससे इतर भारत सरकार के साथ चूंकि शिवसेना भी सरकार में शामिल है, तो शिवसेना इस रूप में आगे क्यों बढ़ रही है? क्या बीजेपी और शिवसेना के भीतर के टकराव का ये प्रतीक है, या फिर जिन स्थितियों को जिस मानसिकता के साथ शिवसेना सोच रही है वो बीजेपी नहीं समझा पा रही है? बीजेपी की जो राय है कि ये चूँकि राष्ट्रीय मसला है, इसको इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। ये सारे सवाल हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल है कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या, चूँकि इसमें ये अपने तरीके की भी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक आयोजककर्ता के चेहरे को इस तरीके से कालिख से पोत दिया और उसमें पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। किताब विमोचन और उसमें डिस्कशन के दौर में मॉडरेट चूँकि सुधींद्र कुलकर्णी को करना था, उसका इंतजार तो हो रहा था कि वो डिस्कशन होगा, वहाँ पर क्या होगा, किस रूप में होगा, लेकिन इस घटना ने सबको अंदर से नए तरीके से राजनीतिक तौर पर इसको बहस छेड़ दी है। क्या राज्य में अगर सत्ताधारी दल ही इस तरीके से करता है तो राज्य का सीएम क्या कहे? और जब केंद्र में भी भागीदारी शिवसेना की है और पाकिस्तान को लेकर अगर ये रवैया मुंबई जैसे शहर में इस तरीके से होता है तो फिर केंद्र सरकार की क्या पहल होनी चाहिए? और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन की मौजूदगी है जो कि पूर्व विदेश मंत्री है और उनकी एक किताब लिखी है। किताब में लगभग 70-80% हिस्सा जो है वो भारत और पाकिस्तान के संदर्भों के मद्देनज़र है और इसके लिए जो डिस्कशन रखा गया था उसमें भारत के एक तबके के बौद्धिक तबके को बुलाया गया था जो पाकिस्तान को लेकर लगातार लिखता रहता है और भारत और नीति जो पाकिस्तान के उसके मद्देनज़र। तो अब ये देख रहे हैं क्या ये कार्यक्रम, इसका भी इंतजार हो रहा है, कहीं वो कार्यक्रम रद्द तो नहीं किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी के ज़रिए यहीं पर विमोचन हो जाएगा? ये सारे सवाल हैं। तो तुरंत फुरत में बुलाई गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें दिखाई भी दे रहे हैं खुद सुधींद्र कुलकर्णी जिनके साथ आज सुबह ये घटना हुई है। बाकायदा 10-15 शिव सैनिक वहाँ पर पहुँचे। हम जरा सुनते हैं क्या वहाँ पर बहस हो रही है। We were expecting that things might go wrong, which they have, with the Shiv Sena going ahead with its threat, but we didn't know that it will happen so soon in the day. We were expecting things to go maybe out of control in the evening when we do the function at the Nehru Center. But here we all are, and without further ado, I will just ask Mr. Sudheendra Kulkarni and Mr. Kasuri to address all of you. Thank you very much. मित्रो, मी सर्वप्रथम मराठीत आमचे माननीय अतिथी खुर्शीद महमूद कसूरी, पाकिस्तानचे पूर्व परराष्ट्र मंत्री, त्यांचा स्वागत करतो। ते पहिल्यांदा मुंबईला आलेले आहेत आणि पहिल्यांदा आमच्या ऑफिसला जे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या ऑफिसला आलेले आहेत। मी त्यांचा स्वागत करतो। ऑनरेबल खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, I extend a very warm welcome to you in Mumbai, the great city of Mumbai, the historic city of Mumbai, and especially to our office, the Observer Research Foundation. We thank you first of all for accepting our invitation to come to Mumbai, even though there were already indications that there are some forces wanting to stop you.
and they had actually threatened the organizers of the Ghulam Ali concert and succeeded in getting that concert called off. In spite of this background, you agreed to come to Mumbai. We are most thankful to you, sir. Our original program was to have a media interaction organized for you at our office as a prelude to the main function for which you have come, the Let me hold it. release. कुलकर्णी सर, कुलकर्णी सर, थोड़ा नीचे 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 सर, नीचे थोड़ा नीचे. Okay. So this is the main function, friends, which is going to happen this evening at 5:30 at Nehru Center. We had received threats from a certain organization, and I have no hesitation in taking the name of that organization, the Shiv Sena, which had threatened the Nehru Center that if they do not cancel the program, they would disrupt it in the typical Shiv Sena style. उन्होंने धमकी दी थी कि शिव सेना स्टाइल में हमारे प्रोग्राम को वो डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे. इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा. आज जिस कारण के लिए हम यहां बैठे हुए हैं वो एक मीडिया इंटरेक्शन कसूरी साहब और मुंबई के पत्रकारों के बीच, तो आपके बीच मैं नहीं आना चाहूंगा. आप कृपया कसूरी साहब को सुनिए और आपके कुछ प्रश्न हो, सवाल हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं. प्लीज लेट्स हैव अ वेरी प्रोडक्टिव interaction, the first interaction, media interaction between Honorable Kasuri Saab and the media, which I want to reiterate is in furtherance of the noble cause of peace between India and Pakistan. Thank you very much, Mr. Kulkarni. First of all, I'd like to express my unhappiness, sadness at what's been done to you, a thorough gentleman, a scholar, and a thinker. I've known him for many years, and I'm most upset at what I see. Why have I come to Mumbai? It's a city where my father did his law degree. It's a city where he was imprisoned at the age of 19 in the Quit India movement during the freedom struggle. I'd heard a lot about this city. And I want to pay a tribute to the city. It's a city which, through its film industry, has enabled people of South Asia to understand each other because they adopt a very simple language. Whether you call it Urdu, Hindustani, Hindi, whatever that language is, it's a unifying factor. It brings the people of South Asia together. So these are all the reasons why I wish to come to Mumbai. It's the commercial capital of India. It's a very, I would say, an inclusive city, and as a political worker, I recognize the right of people to protest. I have myself been to prison many times. I have faced police lathi charges. I have faced tear gas. I know what political opposition is, but I've always understood that as long as it is peaceful, it's justified. It is inherent in the constitution of Pakistan, India, and of other great democracies that you have a right to protest. But what's happened to Mr. Kulkarni is, I think, beyond that legitimate right. Why have I come here? There's another reason. I have seen how quickly it is possible to change people's perceptions. The peace process started with the famous visit of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee to
Islamabad when the joint statement between Pakistan and India was issued. It was the joint statement of January 2004. After that, it was all the way, going forward. Mr. Vajpayee was followed by Dr. Manmohan Singh, and he, with great diligence, carried forward the peace process. And in fact, it was during his tenure that we were able to achieve so much that you will find in this book. I think it was the most productive peace process, starting from Mr. Vajpayee's period to the time that I left office and Dr. Manmohan Singh was still Prime Minister. It was the most productive peace process between the two countries since independence. As far as the perceptions of the people are concerned, I'd like to share with you how quickly they can be changed. The process, I said, started in 2004. I don't know, a couple of years later, whenever, there was a cricket match in Lahore. Matches, as you know, are substitutes for battlefields, particularly if they are between India and Pakistan. Only the other day you saw what happened in a match between India and South Africa. But Pakistan and India have a special type of, they arouse a special type of fervor. But can you believe it, that India won in Lahore, and the young boys and men of Lahore clapped India, cheered India, and ran across the field with Pakistani and Indian flags. What does it tell you? Don't ever estimate the intelligence of the ordinary people. Once they are given a positive impetus, a positive leadership, a positive message, they are not inherently stupid. So I have great faith in the common man in Pakistan and India. And I want to share my story with the people of Mumbai. And I'm particularly grateful the way this book was received in India and the way it was launched. Former Prime Minister Manmohan Singh was there. If Mr. Vajpayee's health had been good, I would have invited him. But instead, he was very ably represented by Islamabad. और इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट हुआ पाकिस्तान और इंडिया का. उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम बने जब वो कांग्रेस की पार्टी के हेड थे और इलेक्शन कांग्रेस जीत गई. और मैंने अपनी किताब में डिस्क्राइब किया है, पहले हमें शक था, हमें अफसोस, हम तो चाहते थे बीजेपी जीते, क्योंकि हमने बीजेपी के साथ प्रोसेस शुरू किया था. हमें ये डर था कि कांग्रेस पार्टी शायद उसको ओन नहीं करेगी. हमारे पाकिस्तान और इंडिया में बदकिस्मती से होता ही है कि कोई पार्टीज ऑपोजिशन में कुछ करती हैं और गवर्नमेंट में कुछ. तो मुझे ये डर था कि इनके साथ तो मैं बात कर चुका हूँ. ब्रजेश मिश्रा साहब ने मुझे लाहौर में कहा था कि 6 महीने में मसला कश्मीर हल करेंगे. भाई 6 महीने में कैसे करेंगे? आपको पता था कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, हमें पता था कि हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है. ब्रजेश मिश्रा एक एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, एक एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट थे. वो कुछ सोच समझ के ही कह रहे थे ना, 6 महीने. और ये उस वक्त उन्होंने कहा था जब एक बैक चैनल शुरू भी नहीं हुआ था. वो मुझे लाहौर में मिले, बर्लिन में मिले, दिल्ली में मिले. फिर दिल्ली में जब वो नहीं रहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और मैं फॉरेन मिनिस्टर था, तो मिश्रा साहब ने मुझे ये खुद कहा. इससे आपको पता लगेगा कि उस वक्त की बीजेपी की लीडरशिप की क्या सोच थी. उन्होंने वाजपेयी के दौर का जिक्र करते हुए बता रहे हैं किस तरीके से शांति प्रक्रिया को वाजपेयी आगे बढ़ा रहे थे. दरअसल वाजपेयी और मनमोहन सिंह सरकार के बीच ही विदेश मंत्री के तौर पर कसूरी थे, इसलिए उस किताब के हिस्सों का वो जिक्र कर रहे थे.